In this video, I am going to introduce you about the Schrodinger equation. Means, what is Schrodinger equation and why we use Schrodinger equation in quantum mechanics. So to know why we use Schrodinger equations, we should know first this thing that what F equals to ma does in the classical mechanics, the same thing Schrodinger equation do in quantum mechanics. For example, if you know the types of forces acting on particular objects, right? Then by using Newton's law of motion, you can set up the differential equations. And if you want to set up the differential equation and with the initial boundary condition, you can find the futuristic event happening to the particular object. Whatever will happen with that particular object, you can predict that. For example, if you know that at t equals to 0, the position of particle is x equals 0. So if I ask you, what will the position of particle at t equals to t naught? So by using the differential equation, you can estimate the futuristic event with that object associated with that particular object, right? So this is about the classical mechanics, how Newton's law of motion works in classical mechanics. Basically, Newton's law of motion works in macroscopic level, not for microscopic level. But when it comes to the Schrodinger equation, which works in the microscopic level, and in Schrodinger equation, basically give the time evolution of a state or a system corresponding to a particular system. Same thing that Newton's law gives in classical mechanics. So Newton's law of motion in classical mechanics actually gives the trajectory of particular particles, right? But this is not in quantum mechanics. Why? Because quantum mechanics governed by some principle like uncertainty principle and superposition principle, which makes it probabilistic rather than deterministic, right? So in quantum mechanics, systems are more probabilistic as compared to deterministic, where deterministic lies in classical mechanics and probabilistic event happens in quantum mechanics. So we cannot 100% surety say that whether what things going to happen with a particular system with 100% surety. This is governed by the uncertainty principle. So now I have introduced something basic difference between the classical mechanics and the quantum mechanics and how Schrodinger equations used in the quantum mechanics, right? Both this theory works well in their different frameworks because they work with a different principle and a different context, right? Now moving forward to the Schrodinger equation, I need to introduce one thing more, that about operators in quantum mechanics. So what does this operators means in quantum mechanics and how we use operators to obtain certain we can say state of the system in quantum mechanics, or quantum mechanical state we can say. So what does this operator mean? Basically operators are nothing but is a mathematical derived quantity, and this derived quantity when we apply on the wave function, that this gives us physical measurable quantity. And what are these physical measurable quantity actually? So this physical measurable quantity means that observable, like if you want to calculate energy, so this is the energy is a physical measurable quantity. Energy, momentum, position, these all are the physical measurable quantity. So if you want to calculate that, so in quantum mechanics you require the different operators for particular measurable quantity. For example, if you want to calculate energy, so there is different type of operator, that is mathematical operator, that we call Hamiltonian operator, and we apply this Hamiltonian operator on the wave functions, then we get energy, right? So what I mean to say that, see, for different observable there is different types of operator. For example, if you want to find the positions of the particles in quantum mechanics, so there will be the position operator. So let's say I want to find the position of particle, so position of particle. So position of particle equal to x and x, like in x direction. So for this particular we have the operators associated with this related to h hat, and for in the y direction if I want to find then y hat, and if in z direction I want to find then z hat. So for position x, the operator will be x hat, in direction y the position operators will be y hat, and in direction z the operators will be z hat. This is for the position, right? And this is the position operators. If I want to find momentum, so what type of operator associated with momentum? So for momentum, let's say momentum, if you want to find momentum in quantum mechanics, for quantum mechanical system, momentum. So like use the momentum particle in x direction. So for this particular measurable observable quantity, the operators are associated which is given like p hat, that is equal to 0.7 h cut del over del x. Where del over del x is the partial derivative, and it is imaginary, h is the reduced Planck constant, right? So this is the operator associated with the momentum. Okay. Now, if I want to find the energy for the given system in the quantum mechanics, so for that we require another type of operator which we call Hamiltonian operator. Hamiltonian operator is the energy operator, and that is given as h hat. So there are lots of depending upon the observable quantity, there are different types of operator. So I am introducing only these three type of operator. There are other operators like we can say angular momentum operator and linear momentum operator. This is a linear momentum operator. There is also called angular momentum operator and so on and so forth. But this is the basic about these operators. So what does operator do in quantum mechanics? So operators apply in the wave function and give the measurable or observable quantity or measurable quantity, for example energy, momentum and position, right? So these are about the operators. Now
moving further in Schrodinger equation, in the derivation part, I want to introduce one thing more. That is energy eigenvalue and eigenvector, or a wave vector, we can say wave functions. So what is this? Important, what is this? What is the wave? So basically, energy eigenvalue and eigenvector simply it is a mathematical derived quantity. It is a totally mathematical things. Like in mathematics, when you read matrices, in matrices you encounter this thing, the eigenvalue and eigenvector. So what is eigenvalue and eigenvector? Let's say there is a matrix, and this apply in the wave we can say wave vector. Let's say sign the wave vector. That will give the eigenvalue lambda, and again they will repeat the same wave vector. So what is here? This is the matrix, right? Here is the matrix, and this is wave vector, and this is the eigenvalue, and it will repeat the wave vector. And this is called the eigenvalue. If when you apply the matrix on given wave vector and it gives a constant and repeat the same wave vector, then this constant is known as eigenvalue. This is totally mathematical concept which we use in basically matrices. This concept and whole equation is called eigenvalue equation. But in quantum mechanics, the surprising part is that when you apply the matrix, and in that case the matrix are nothing but these operators. For example, when you operate H operator, that is Hamiltonian operator on psi, in that psi is converted from wave vector to be say the wave function, that will equal to E into psi. But E is nothing but the energy eigenvalue. It means what you are doing is you are applying the matrices on a wave function that is giving you a physical measurable quantity, right? तो देखो कितना मजेदार चीज है क्वांटम मैकेनिक्स में कि हम एक मैथमेटिकल डिराइव्ड क्वांटिटी से एक फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी निकाल रहे हैं। एनर्जी क्या है? फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये एक तो पूरा मैथमेटिकल डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहाँ से वो क्या मिल रहा है? एनर्जी आएगा, मतलब कि उस सिस्टम के लिए हमको एनर्जी मिल रहा है जिस सिस्टम पे हम ये जिस सिस्टम यानी कि जो वेव फंक्शन है उस पे जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि एनर्जी आएगा मतलब एनर्जी आएगा मिल रहा है, ये एनर्जी ऑपरेटर है। तो कितना मस्त चीज है, मैथमेटिकली डिराइव्ड क्वांटिटी है जहां से हमको फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी मिल रहा है। ये ब्यूटी क्वांटम मैकेनिक्स है, क्योंकि यहाँ पे टोटली मैथमेटिक्स है और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्वांटम मैकेनिक्स में। अब नेक्स्ट है कि हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव कैसे करेंगे। तो हम ड्राइव नहीं करेंगे, एनालॉगस लेंगे और उसकी हेल्प से सिंपली डिराइव करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसके बाद हमको हैमिल्टोनियन डिफाइन करना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है। तो हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन से डिफाइंड टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल के टर्म में कैसे लिख मोमेंटम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर 2m। सो हम यहां पे करेंगे इसको लिख देंगे। सो h इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, राइट? एंड द पोटेंशियल I will write v of x. I'm concerned only about in one direction, like x direction, right? Therefore I'm writing v of x. So this is nothing but this Hamiltonian, total energy of the system. Now I want to define this Hamiltonian term of operator. So what I will do, for momentum operator we know that p hat is equal to minus omega h del over del, right? ये होता है। अब इसको स्क्वायर करो। सो p hat का स्क्वायर हो गया माइनस h का स्क्वायर del over del स्क्वायर में del स्क्वायर। अभी कैसे हो देखो, स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये h का स्क्वायर हो जाएगा del स्क्वायर में del स्क्वायर। इसका क्या है? डिवीजन है। इसको हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे। तो जब हम पुट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे h है इक्वल टू, क्योंकि अब तो इसको ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो h का क्या लग जाएगा? हेड लग जाएगा, और इसके जगह पे मैं वहां लिख दूंगा माइनस h का स्क्वायर पे h का स्क्वायर होगा del स्क्वायर और del x स्क्वायर और में 2 है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा v है x। सिंपली क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको हम लोग सिंपली v हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अगर v है मतलब ऑपरेटर का मतलब v से ये मेरा फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी है, इसके लिए जो ऑपरेटर है वो भी है। अगर एक टाइम वन डायमेंशन है तब तो इसके लिए मैंने डिफाइन कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर द सिस्टम, जो सिस्टम है उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डिफाइन हो गया। अब क्या करना है देखो, मैंने इसका यूज करेंगे। सो इक्वेशन 2 बोलो, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फ्रॉम 1 to what I will get that h hat into psi that is equal to minus h square over 2m del square del x square plus v hat into x, v hat x, right? And when I will use this, I will get सर ये मिल जाए, ठीक है? क्लियर करना है। अब देखो यहाँ से ये इसके बराबर हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं माइनस h स्क्वायर अपॉन 2m del स्क्वायर ओवर del x स्क्वायर। जब इसका साइन ऑपरेट करेंगे तो कैसा आएगा? ऐसे साइन प्लस v ऑफ x into sin of x into sin। इसको इससे डालो कैसे इससे इसे x हो जाएगा वन डायमेंशन का। ये क्या हो गया? ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया फॉर वन डायमेंशन की श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया। कब जनरल पोटेंशियल जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। अब ये क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट मतलब दो तरह का श्रोडिंगर इक्वेशन है, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। डिपेंड करता है कि हमारा पोटेंशियल कैसा है। अगर हमारा पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम से वेरी कर रहा है, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट लेंगे।
लेकिन हमारे केस में भी क्या है, ये जो पोटेंशियल है टाइम का फंक्शन है, यानी पोटेंशियल समय के साथ चेंज नहीं कर रहा, तो समय के साथ चेंज नहीं करेगा, तो उस केस में क्या लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे। और यही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशन। इसी को जनरलाइज कर सकते हैं थ्री डायमेंशन केस। वो कैसे देखो, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चेंज हो जाएगा मेरा। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव से जगह लाप्लासियन ऑपरेटर आ जाएगा, जो कि माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2 है डेल स्क्वायर साइन प्लस v x sin of x into e sin of x। तो ये थ्री डायमेंशन क्या आ गया, ये थ्री डायमेंशन आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट इन वन थ्री डायमेंशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गया। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, तो विद हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन हम वेव फंक्शन ऑपरेट, मतलब इस पे अप्लाई करने के बाद हमको यहाँ से वेव फंक्शन मिलेगा, और जो वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में पूरे पार्टिकल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके अंदर कंसिस्ट होता है। मींस वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द क्वांटम सिस्टम। तो जो भी सिस्टम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड द एनर्जी फॉर द पर्टिकुलर पार्टिकल्स इन द डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स, सो by using the wave function applying this Schrodinger equation you can find the energy for the related particular particles, right? इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सबसे सिंपल सिस्टम क्वांटम मैकेनिक्स में तो वन डायमेंशन पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, जिसमें हम विजुलाइज करना बहुत आसान होता है। उसमें क्या होता है, आराम से लोग विजुलाइज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम क्या आता है, मैथमेटिक्स इज नॉट अ पार्ट डिफिकल्ट पार्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिक डिफिकल्ट थिंग इज टू विजुलाइज। बिकॉज़ यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग इन डायमेंशन में बात करते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं हिल्बर्ट स्पेस में बात करते हैं। हिल्बर्ट स्पेस जो वेक्टर स्पेस होता है इनफाइनाइट डायमेंशन में होता है, तो विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैथमेटिक्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हाँ थोड़ा सा है, मतलब इतना भी आसान नहीं, लेकिन हाँ विजुलाइजेशन पार्ट ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट बनाता है, बिट कॉम्प्लिकेट बनाता है, जो विजुलाइज नहीं हो पाता, इसी कारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वरना इसका मैथमेटिक्स का कॉम्प्लिकेट नहीं है। सो दिस इज अबाउट द श्रोडिंगर इक्वेशन। And now I have derived the basic use of analogous to the Hamiltonian operator, and I have derived this quantity, that is Schrodinger equation. And the Schrodinger equation same things do as the Newton's law of motion you do in classical mechanics. So this is a short video about the Schrodinger equation. I think you will understand this thing. Thank you.